Hello class, welcome back. Welcome back to your maths class. So kids, we have started this chapter measurement of capacity, and in this chapter till now we have done conversion, and then we have started in the last class addition. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? लास्ट क्लास में हमने एडिशन ऑफ कैपेसिटी स्टार्ट यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी स्टार्ट किया था. सो व्हाट इज एडिशन? बेसिकली व्हाट इज एडिशन ऑफ द यूनिट ऑफ कैपेसिटी? मीन्स व्हेन वी हैव टू ऐड टू यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी. जब कैपेसिटी की टू यूनिट्स को हमें जोड़ना पड़ता है. नाउ सपोज इफ आई हैव टू ऐड 25 मिलीलीटर प्लस 12 मिलीलीटर. ठीक है, मान लो मुझे अब इन दोनों को ऐड करना है. तो दिस इज व्हाट, अब मिलीलीटर इज व्हाट, मिलीलीटर एंड मिलीलीटर दे आर व्हाट, दे आर द units of capacity, and what I am doing here, I am adding them together. What I am doing here, I am calculating their total. मैं क्या कर रही हूँ? उनका टोटल कर रही हूँ. तो what I am doing, मैं इनका टोटल करके I am finding out the sum. तो what you will get if you will add 25 milliliter plus 12 milliliter. अब इन दो को आप ऐड करते हो, what you will get? Milliliter 5 plus 2 7 and 2 by 3. So the answer is 37 milliliter. है ना? Answer you will get will be 37 milliliter. This is the answer. Got it? ये क्या है? ये आपका आंसर आ गया. Now moving ahead. तो कल की क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन एडिशन के किए थे ना. आज भी हम क्या करेंगे? कुछ एडिशन के क्वेश्चन करेंगे. Now kids, suppose there are 3 kids. Suppose क्या है? 3 बच्चे हैं हमारे स्क्रीन पे. ठीक है, अब इन तीनों बच्चों ने क्या किया? इन तीनों बच्चों ने मार्केट जाके मिल्क खरीदा. इन तीनों बच्चों ने क्या किया? ये मार्केट गए और ये वहां से क्या खरीदे? इन तीनों ने मिल्क खरीदा. तो he is kid number A and B and he is C. kid number A, B, C. ठीक है, तो kid A ने कितना मिल्क खरीदा? kid A ने मिल्क खरीदा से 3 लीटर 254 मिलीलीटर. किड ए ने क्या किया? 3 लीटर 254 मिलीलीटर मिल्क खरीदा. किड बी, नाउ इज टर्न फॉर किड बी. अब किड बी ने कितना मिल्क खरीदा? किड बी ने जो मिल्क खरीदा वो था 2 लीटर 125 मिलीलीटर. एंड किड सी ने, नाउ टर्न किसकी आई? किड सी की आई. किड सी ने कितना मिल्क खरीदा? किड सी ने मिल्क खरीदा 322 मिलीलीटर. 322 मिलीलीटर किड 3 ने मिल्क खरीदा. ठीक है, कितना मिल्क खरीदा? 322 मिलीलीटर इतना मिल्क खरीदा किड 3 ने. तो नाउ अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इन तीनों किड्स ने मिल्क एक साथ कितना मिल्क खरीदा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर मैं पूछूं आपसे, तो हाउ यू विल गिव मी? अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी थी, तो हाउ यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन? वो फिर आप कैसे करोगे? व्हाट यू विल डू? यू विल ऐड. तो इन दिस क्वेश्चन आपने क्या करना? यू हैव टू ऐड. कम ऑन, ऐड देम टुगेदर. चलो ऐड करो, इन सभी को ऐड करना है आपने. कम ऑन, डू द एडिशन. यस, डू द एडिशन. If completed, then do the addition. Come on, add करिए.
स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट प्लेस, राइट मोस्ट प्लेस से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट प्लेस। ओके, सो व्हाट वी विल राइट, मिलीलीटर का तो हियर वी विल राइट ओनली मिलीलीटर, मिलीलीटर का मिलीलीटर वी हैव रिटन। नाउ हियर वी आर हैविंग 4 plus 5 plus 2. What we are having here? 4 plus 5 plus 2. Now what you will get when you will add 4 plus 5 and plus 2? What you will get? 5 plus 4, 9. Okay? And 9 into 11. 5 plus 2, 5 plus 4. 5 plus 4 you will get 9 and 9 plus 2, 11. So here I will write for 11, I will write only 1 here and will give 1 carry at the top. Now here I am having 5 plus 2, 7. 7 plus 2, 9. 9 carry 1, 10. So here I will write 0. Okay. Now again I will give 1 carry here. Now here I am having 2 plus 1 plus 3. 2 1 3, 3 plus 3 6 and 6 1 7. Okay, so 701 milliliter, and here we will get 3 to 5. 3 plus 2, 5 liter. So the answer is 5 liter and 701 milliliter. Now one thing that you must notice that जब किट C के पास 322 मिलीलीटर था तो हमने उसे लिखा कहाँ? जब किट C के पास 322 मिलीलीटर मिल्क था तो उसे हमने कहाँ लिखा? मिलीलीटर वाले कॉलम में लिखा, उसे हमने लीटर वाली रो कॉलम में नहीं लिखा। गॉट इट? कम ऑन, नोट इट डाउन। यस, कम ऑन, नोट इट डाउन। कम ऑन, note it down. Completed? Okay. Now moving toward the next question. Now suppose आज की क्लास में मुझसे एक बच्चे ने बोला कि मैम मुझे कन्वर्जन नहीं आ रहा, प्लीज मुझे कन्वर्जन एक बार और बता दीजिए। So 5 liter 701 milliliter. Let us see how we will convert it. 5 liter 701 milliliter. Let us see how we can convert it. Question is, we have to convert 5 liter 701 milliliter. ठीक है, 5 liter 701 milliliter. We have to convert this. Now how we will convert this? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? We will start from 1 liter equals to. ठीक है, तो first line that we will write will be 1 liter equals to 1000 milliliter. Okay, 1 liter equals to 1000 milliliter. So 5 liter and 701 milliliter equals to 5 liter 701 milliliter equals to what you will do? 5 liter plus 701 मिलीलीटर. ठीक है, 5 लीटर प्लस 701 मिलीलीटर. ठीक है, ना अब क्या करेंगे?
करेंगे, we will convert this 5 liter. Now what we will do, we will convert this 5 liter. Now do the conversion ahead. Chalo, ma'am will help you, but you do it. Come on. Completed? Okay. Now see, we have to convert this 5 liter. ठीक है, तो जब हम 5 liter को convert करेंगे तो what we will get? When we will convert this 5 liter, so 5 into 1000 milliliter plus 701 milliliter. ठीक है, 5000 milliliter plus 701 milliliter. So 5 into 1000 what we will get? As I have told you just now, 5 into 1000 we will get 5 into 1000 milliliter we will get 5000 milliliter plus 701 milliliter. Now adding them together what you will get when you will add them? Tell me. अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 5000 मिलीलीटर और 701 मिलीलीटर को ऐड करना है तो कितना आंसर आएगा हमारा? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 5701 milliliter. 5701 milliliter. ठीक है, 5701 milliliter. This is our answer. ठीक है, तो it is important for us to keep in mind that how we convert. Now note it down. Come on, note it down. Note down the conversion. Okay. I'm going to erase. We will do some more questions. Now the next question we are going to do is of what? Next question is of addition. ठीक है? Now what you have to do? You have to add. ठीक है, आपने ऐड करना है. How much you have to add? 6 liter 450 milliliter and 3 liter 125 milliliter. Come on, do the addition. 6 liter 450 milliliter, 6 liter 445 milliliter, and in that you have to add 3 liter 125 milliliter. Come on, do the addition. First what you will make? First you will make two headings, liter and milliliter की two headings you will make. Come on, do it. Okay. Completed? Can we move ahead? Okay. So here we will make two headings. Liter and at a
distance I will write milliliter. Liter and milliliter. ठीक है. How many liters? 6 liter 450 milliliter. Then 3 liter 125 milliliter. 3 liter and 125 milliliter. 6 liter 450 milliliter and 3 liter 125 milliliter. Okay. Now add them together. Come on, add करिए. Completed? See, we'll start from here. So here we are having 0 plus 5. So in properties of addition, I have told you that whenever you will add 0 in any number, what you will get? 0 plus 5 is equals to, you will get 5. So I will write 5 here. Next is 5 plus 2. 5 plus 2 is 7. So I have written 7 here. And next 4 plus 1. 4 plus 1, what you will get? 5. 4 plus 1 you will get 5. Okay. Now here you are having 6 plus 3. 6 plus 3. 7, 8, 9. 6 plus 3 you will get 9. So the answer is 9 liter 575 milliliter. Answer is what? Answer is 9 liter 575 milliliter. Okay? Note it down. Come on. Yes, note it down. Completed? Okay. Now moving toward the next question. Now one thing that you must have noticed that this question is without regrouping. Carrying वाला नहीं था. इस question में कोई भी carry add नहीं करना था. Now next question that we will do, in that question you have to add the carry also. ठीक है? That question will be with regrouping. ठीक है? उस question में आपने क्या करना होगा? Regrouping करनी होगी. Now, let's do it. Okay. Moving toward the next question. Next question we are having 8 liter 223 milliliter and 1 liter 283 milliliter. Come on, do the addition. 8 liter 223 milliliter and 1 liter 283 milliliter. So first what you will do? सबसे पहला हमेशा लीटर
milliliter. Two heading you will make. One for liter and the other one for milliliter. Come on, do it. Completed? Okay. Liter and milliliter. Come on. So here we will write 8 liter, 223 milliliter, then 1 liter and 283 milliliter, and you have to add them together. Come on. Do the addition. Yes, do the addition. Completed? Okay. Now here we are having 3 plus 3. ठीक है? Right most side क्या है हमारे पास? 3 and 3. So 3 plus 3, what we will get? We will get 6. Here I will write 6. Next we are having 2 plus 8. So we will write here 2 plus 8. Now 2 plus 8, what you will get? 2 plus 8 you will get 9, 10. 2 plus 8 means what? 9, 10. ठीक है? So 10. 0. So this 0 you will write here and give one carry at the top. Now we are having 2 plus 2, 4, 1, 5. मतलब 2 plus 2 plus 1. 2 plus 2, 4, 1, 5. Now, this is what? 8 plus 1. 8 plus 1 equals to, you will get 9. Okay? So, the answer that you will get here will be 9 liter and 506 milliliter. 9 liter, 506 milliliter. Okay, this is what? This is your answer. Now class, if I ask you to convert 9 liter 506 milliliter into milliliter, how you will do it? Come on. First note down the question and then we will do the conversion also. Okay, note down the question and then we will do the conversion also. ठीक है? Yeah, come on, do it. Completed? Okay. Now let's do it. Okay, yeah. Now the next question. So
okay, wait, we have to do the conversion also now. So I forgot the number. So let's see. Let's assume that number is 9 liters and 506, I guess. Yeah. 9 लीटर 506 मिलीलीटर. ठीक है, मैम भूल गए यहाँ पे 506 था या 806 था, बट स्टिल कन्वर्जन ही तो करना है. नाउ व्हाट वी विल डू, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. ठीक है. नाउ 9 लीटर 506 milliliter equals to 9 liter plus 506 milliliter. ठीक है. Okay, moving ahead. 9 into 1000 milliliter plus 506 milliliter. Now 9 into 1000 milliliter means what we will get, 9000 milliliter plus 506 milliliter. Okay. Now 9000 plus 506 milliliter, what we will get together? We will get 9506 milliliter. है ना? This we will get. Okay. Come on, note it down. Okay. Now class C. So we are doing addition of units of capacity and we are doing some worksheet question. ठीक है, additional question we are doing. Now from the next class I am going to start your book exercise. ठीक है, next class से after explaining some more question I am going to start your exercise question. ठीक है. So let's do one more last question for this class. Question is, three liter 435 milliliter and you have to add it in 1 liter 572 milliliter. ठीक है, 3 liter 435 milliliter and 1 liter 572 milliliter. Okay, now let us do. So we will make two heads, liter head and here we will make milliliter head. Okay, we have made two heads. Now 3 liter 435 milliliter and then 1 liter 572 milliliter. Now add them together. Here 5 plus 2, what we will get? 5 plus 2 we will get 7. Okay. Now 7 plus 3, 10. For 10 we will write 0 here and we will give carry 1 at the top. Next 5 plus 4, 9 and 9 1, 10. We will give carry 1 here. 3 1 4 and 1 5. So answer is what? 5
Okay. So class, this is it for today, and now we will meet in our next class.